Good morning, students. Today I welcome you all in this session. Today we are going to discuss the case studies of chapter 3rd, that is public, private and global enterprises, students. So let us discuss the case study, students. This is supposed to be the very first case study, right, students? As I told you each and every time in case studies, just see the last 2-3 lines. कि last 2-3 lines में क्या दिया हुआ है, right, students? So under this very first case study, come to the first point, second point and third point. The very first point is identify the two sectors being highlighted above by quoting the lines, right, students? Two sectors बताने इसके अंदर कौन कौन से दो sectors है, students? Second point, state any two difference between the two sectors as identified in first. You have to identify the first point and then go to the two differences. List any two values that bank want to communicate to the society. You have to write down the values. Values must be social of kind, right, students? So let's discuss the very first case study. It has been clear, students, from the very first point, identify the two sectors. Two sectors means you know it very well. There is private sector or public sector. Private sector or public sector comes under chapter 3rd. So ये chapter 3rd की case study है, right, students? From this thing you have to identify the case study. Now come to the case study, students. 2 years back, Kushal had joined a branch of Axis Bank on business development manager. Right, students? Kushal has joined Axis Bank as business development manager, whereas his younger brother Krishna has recently joined State Bank of India as probationary officer in Chennai. राइट स्टूडेंट्स, एक ने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया है एज अ डेवलपमेंट मैनेजर और उसके ब्रदर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सिस बैंक कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर और स्टेट बैंक कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर. While discussing about their job experience, both the brother realized that the working of two banks varies primarily because they belong to different sectors. I hope it is very much clear to you of the economy. However, on certain parameters, the approach of both the banks is similar, like offering of high rate of interest on fixed deposit, ensuring safety and security in net banking, and so on. Right, students? I hope from this paragraph, this situation, this case study, it is very much clear to you कि answer क्या होगा. Now come to the very first point. Identify the two sectors being highlighted above by quoting the lines. Right, students? तो answer first है बेटा, Kushal had joined a branch of Axis Bank. Axis Bank as a development manager, so it's a private sector. And second one is state any two difference between the two sectors. You have to write the two differences, students. Krishna has recently joined the State Bank of India as a professional officer. It is a comes under public sector banks. Values students क्या होंगी? Providing good returns और safety. Of course, students, bank safety भी देता है और good returns भी देता है. From the earlier video, it has been very much clear to you. Now the two difference. You have to write two differences, students. The ownership is entirely with the private individuals under private sector. Under public sector, the ownership is with central government or state government. This you know very well. ये एक difference हो जाएगा. Second is, students, the main aim of private sector is to earn maximize profit. The main aim of public sector is public welfare. I hope it is very much clear to you, students. Now come to the next case study. Now come to the case study 2, students. Of course, this is supposed to be the second case study. Come to the A, B, C, D point, students. Right, students? So name the type of public sector enterprises railway is concerned. Type of public sector अब आपको क्लियर होगा किस चैप्टर से. What is the status of employees working in railways? How does it get its finance? What does it do it with its revenue? Now students, come to the case study. इंडियन रेलवे और पब्लिक सेक्टर. आपको पता है बेटा, इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर के एक ही पार्ट में आते हैं. देयर आर 3 पार्ट्स: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. रेलवे किसके अंदर आएगा? इट इज कम्स अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टूडेंट्स. सो कम टू द केस स्टडी, स्टूडेंट्स. लेट्स डिस्कस द केस स्टडी. इंडियन रेलवे इज अ पार्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री. It is organized, financed and controlled by Railway Ministry. The finances are allocated from government treasury and whatever revenue it earns is deposited to government treasury only. It is treated as a part of government and even the appointment, recruitment and selection of employees is done in the same way as that of civil servant. I hope it is very much clear to you, students. Now come to the answers. Name the type of public sector enterprise railway is considered. Answer: departmental undertaking. It is very much clear to you now, students. What is the status of employees working in railways? They are civil servants. Right, students? अगर आपने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को सारा याद किया होगा, मेरी वीडियोस को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप ये केस स्टडी आराम से कर पाएंगे. How does it gets its finance? From government treasury. What does it do with its revenue?
इट इज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। सरकारी खजाने में के हिसाब से पैसा आता है इस पर और सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट केस स्टडी स्टूडेंट्स, आई होप दिस केस स्टडी इज वेरी मच क्लियर टू यू। इट्स सिंपल केस स्टडी। नाउ कम टू द थर्ड केस स्टडी स्टूडेंट्स, कम टू द लास्ट पॉइंट्स A, B, C, D. Name the type of public sector enterprises referred in the above case. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज केवल 3 है स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों में से किसी एक की केस स्टडी होगी। बी पॉइंट, नेम द एक्ट अंडर विच इट इज फॉर्म्ड। नेम एनी अदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। Name the two features of statutory corporation mentioned above. It is very much clear to you students now कि statutory corporation से पूछा गया है, right students? Because statutory corporations जो formed होता है by the special act of the parliament से form होता है और LIC सबसे बड़ा example है उसका, right students? अगर आपने statutory corporation की वीडियो देखी होगी और मेरे नोट्स याद करे होंगे, it is very much easy to you. Now come to the case study students. With enactment of LIC Act 1956, an autonomous body, Life Insurance Corporation of India, was formed. The Act defines its powers, duties, and functions. It has a separate legal entity. It is fully owned by the government. It is independent financial policy and can raise funds by borrowing from public and government. However, it is not subject to any budgetary accounting or audit control like railways. Its annual report is presented in Parliament every year. Now, students, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज द ओनली कॉर्पोरेशन जिसकी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती है, बिकॉज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन इज फाउंड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ कम टू द ए पॉइंट स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स अंडर दिस केस स्टडी। नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रेफर्ड इन द अबव केस। आंसर इज स्टूडेंट्स पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बी पॉइंट, नेम द एक्ट अंडर विच इट इज फॉर्म्ड, LIC, राइट स्टूडेंट्स। Name any other statutory corporation, ONGC, RBI. That students, there are various other statutory corporation. You know it very well, students. You can give the answers of different statutory corporation: SBI, LIC, FC, Food Corporation of India, ONGC. Right, students? State any two features of statutory corporation. You have to write the two features, students. The very first, it is created by the Act of Parliament or central or state legislature. Second, the power, objective and limitations of public corporation as defined in the act only. It operates under the total control of central or state government. Right, students? I hope it is very much clear to you. So, come to the next case study, students. Now, come to the next case study, students. Let's discuss the A point, B point, C point. Right, students? As I told you each and every time कि केस स्टडी की हमेशा लास्ट की 2-3 लाइन्स पढ़नी चाहिए, उससे आपको पता लगेगा अगर वो पैराग्राफ फॉर्म में, अगर वो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में, तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट पढ़ना चाहिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि केस स्टडी किस टॉपिक से, किस चैप्टर से पूछी गई है। नाउ अंडर ए पॉइंट, नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रेफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। ये तो क्लियर है स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पूछी है तो ये चैप्टर 3 और पब्लिक सेक्टर में से पूछा गया है। पब्लिक सेक्टर में 3 ही आते हैं स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल। द वेरी फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। बी, गवर्नमेंट बाय शेयर्स इन हुज नेम। आपको पता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बाय शेयर्स इन हुज नेम। सी, वेयर डज गवर्नमेंट कंपनी सबमिट देयर रिपोर्ट्स। राइट स्टूडेंट्स, आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है स्टूडेंट्स जिसमें जो नेम होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, 51% शेयर जो गवर्नमेंट के पास रहते हैं और 49% शेयर जो पब्लिक में इशू किए जाते हैं विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो परफेक्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट कंपनी का, तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इट इज अ केस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। लेट्स डिस्कस द केस स्टडी स्टूडेंट्स। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज कैरिंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। Majority of its shares is held by the government of India. देखिए क्लियर हो गया, majority of the share is held by the government of India. It is registered under the Companies Act 1956 and enjoy all the characteristics of a company. Now from all the 3 companies students, government company is from all the 3 public corporation students, government company is the only company that comes under public sector enterprises which enjoy full features of Indian Companies Act 1956 or the latest amendment of the Indian Companies Act 2013. The board of directors are appointed by the government. The board and shareholders are responsible for the efficient working of the company. The company prepares annual report and submit it to the appropriate authorities. अब बेटा appropriate authorities कौन है? राज्यसभा और लोकसभा, पार्लियामेंट में। राइट स्टूडेंट्स, आई होप गेल से आपको पता लग गया होगा
और इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट से आपको पता लग गया होगा। और मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, शेयर्स एक ही कॉर्पोरेशन इशू करती है, केवल गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है। सो दीज आर द हिंट्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम द केस स्टडी। और हिंट्स बेटा आपको तभी पता लगेंगे जब आपने वीडियोस पढ़ी होंगी और नोट्स याद करे होंगे, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो शॉर्ट फॉर्म के स्लाइड्स हैं उससे आपने अपने नोट्स बनाए होंगे असाइनमेंट कॉपी के अंदर। Now come to the A point. Name the type of public sector enterprise referred in the above para. Answer: government company. Government buys shares in whose name? Of course, with the President of India. Where does government company submit their reports in the Parliament, Lok Sabha as well as Rajya Sabha? I hope this is very much clear to you, students. Now come to the next case study. Now discuss the next case study, students. Come to the points of the fifth case study, students. ये 6 marks की है. मार्क्स इसमें राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स. दिस इज सपोज टू बी द 6 मार्क्स केस स्टडी. तो 6 पॉइंट्स पूछे गए हैं. कम टू द ए पॉइंट स्टूडेंट्स. विच लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट गवर्न्स द एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज कंपनीज. कंपनीज पूछी गई हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड है. हु इज द मेजर शेयर होल्डर एंड फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज. हाउ मच पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन दीज कंपनीज. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स. इन हुज नेम द शेयर्स ऑफ दीज कंपनीज परचेज. नाउ इट इज वेरी मच क्लियर. Now it is very much clear from C point and D point that it is the case study of a public, private and global enterprises students. और यहाँ पे शेयर्स की बात करें, शेयर्स तीनों पब्लिक कॉर्पोरेशन में केवल एक कॉर्पोरेशन इशू करती है, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. E point, how are the employees of these companies appointed? How does these companies obtain its funds? So let's discuss the case study student. Bharat Heavy Electricals Limited. Now it is very much clear to you. BHEL और Steel Authority of India बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी. तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड ये केस स्टडी है, क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. ये मैंने मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, मेरे अपनी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है. सो लेट डिस्कस द केस स्टडी स्टूडेंट्स. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीइंग गवर्नमेंट कंपनीज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस टू द पब्लिक एट लार्ज. Majority of the shares are held by the government. It is registered under the Companies Act 2013 as well as the Companies Act 1956 and thus possesses all characteristics of a company like separate and legal entity, perpetual succession and a common seat. Like I told you earlier in my videos, students, government company can enjoy all the characteristics of a company. राइट स्टूडेंट्स, जो कंपनी की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हुई हैं. द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. ये आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी भी कंपनी के सारे फीचर्स को एंजॉय करती है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी जस्ट लाइक अ कंपनी. द डिफरेंस हियर इज ओनली दैट कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदे जाते हैं और गवर्नमेंट कंपनी में 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट अपने पास रखती है. बाकी 49% जो शेयर कैपिटल बची हुई है वो पब्लिक में इशू करी जाती है. Right students, let's go further. It can sue and be sued, enter into contracts and acquire property in its own name. The board is appointed by government and its shareholder and is responsible for the efficient management. The company prepares its annual report and submitted it to the appropriate authorities. Appropriate authorities कौन सी है आपको पता है, लोक सभा और राज्य सभा. Right students? So which legislation of the parliament governs the establishment and functioning of these companies? Which legislation? आंसर है बेटा इसमें द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. राइट स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 दोनों के अंडर में ही कंपनी आती है और गवर्नमेंट कंपनी आती है. हु इज द मेजर शेयर होल्डर एंड फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज. यानी गवर्नमेंट कंपनी का मेजर शेयर होल्डर कौन सा है? आंसर देखिए बी, गवर्नमेंट है. कितने परसेंट शेयर है? इसमें लिखा सी पॉइंट. हाउ मच पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन दिस कंपनीज? एटलीस्ट 51%. नेक्स्ट पाइए, इन हुज नेम, बी पॉइंट, आर द शेयर ऑफ दिस कंपनीज परचेज? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. ई पॉइंट पे आइए स्टूडेंट्स. How are the employees of these companies appointed? According to the Memorandum of Association and Articles of Association. Memorandum of Association and Articles of Associations are the laws and bylaws of the government company. और ये हमारी कंपनी भी तैयार करती है, गवर्नमेंट कंपनी भी तैयार करती है. इसके अंदर सारी बातें लिखी होती है कि एम्प्लॉयज किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे. इसमें स्टूडेंट्स पब्लिक के सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं और प्राइवेटली भी अपॉइंट किए जाते हैं. राइट स्टूडेंट्स, हाउ डज दीज कंपनीज ऑब्टेन इट्स फंड्स?
राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज इशूड अंडर पब्लिक, तो वहां से पब्लिक शेयर्स खरीदती है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वहां से इनके पास पैसा आता है, राइट. सो F point, how does these companies obtain its funds? The answer is it obtain funds from government and private shareholdings and can also raise funds in the capital market. Right students, ये company loan भी ले सकती है because this company can enter into contract. Right students, you and be sued, right, and held property in its own name like a natural company. Right students, so come to the next case study. I hope it is very much clear to you students. Now students, come to the next case study students. Case study 6, 5 marks के case study students. Come to the A point और B point. Identify the type of business enterprise formed by merging Surya Limited and Emco Limited. Merging, जहाँ mergers हो रहे हैं, जहाँ पे दो कंपनीज आपस में आके मिलती हैं. स्टूडेंट्स, देयर इज ओनली वन टॉपिक जहाँ पर दो कंपनीज आपस में आके मिलती हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर. और जॉइंट वेंचर आपने कहाँ पढ़ा है? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. बी पॉइंट में क्या पूछा गया है? स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ सच बिजनेस एंटरप्राइजेस. सो लेट डिस्कस स्टूडेंट्स केस स्टडी नाउ. इट इज वेरी मच क्लियर कि अब क्लियर हो गया है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी है. इट इज अ रिलेटेड टॉपिक केस स्टडी ऑफ जॉइंट वेंचर. नाउ कम टू द केस स्टडी स्टूडेंट्स. Emco Limited, an American company, is manufacturing a high quality products which is very popular in America. The company is searching for the possibilities of exporting its products to foreign countries. After a thorough search on the internet, it arrived at the conclusion that India can be a good market for its products. Right students? But the company is unaware of the distribution system in India. Now the company is looking for such a company which is already established in India and has a strong distribution system. Once again, it searched on the internet and found that there was an Indian company named Surya Limited which was facing several financial constraints, but it had a very strong distribution system. Emco Limited, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, negotiate with Surya Limited and both the companies made an agreement to jointly run their business. Right students, jointly run their business. बेटा ये MNC नहीं होगी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगी स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर MNC के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करती है. MNC अपनी ब्रांचेस लेती है. यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स आपके माइंड में नहीं होना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडिया के अंदर ही होती है. एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में आके काम करते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर 3 कॉन्सेप्ट. एक MNC का कॉन्सेप्ट है, एक जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट है और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है. MNC हो नहीं सकता बिकॉज स्टूडेंट्स MNC अपनी ब्रांचेस खोलेगी, वो किसी के साथ ज्वाइंट बिजनेस नहीं करेगी, जिसको हम बोलते हैं MOFA, मेजोरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स. आपने पढ़ा होगा MNC में. तो MNC तो ये है नहीं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी ज्वाइन टू फॉर्म द फर्म टुगेदर, दैट कम्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये वो भी नहीं है. सो द लेफ्ट इज जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर के अंदर 2 कंपनीज हो सकती हैं और मेनली 90% बाहर की कंट्री की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करती है और इंडियन कंपनी को ज्वाइन करती है और एक बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करती है. दैट कम्स अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी और स्टूडेंट्स जॉइंट वेंचर. राइट स्टूडेंट्स, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. इन दिस वे द अमेरिकन कंपनी विद द हेल्प ऑफ सूर्या लिमिटेड गॉट अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ एंटरिंग द फॉरेन मार्केट्स. I hope it is very much clear to you. The answer is joint venture students, and state any 4 features of such a business enterprise. Now discuss its 4 features students. Let's discuss one by one students. The very first students is increase resources and capacity. In joint venture, company get larger resources, financial as well as human resources, enabling the company to grow and expand more quickly and efficiently. Right students, come to the next one. Access to new market and distribution network. When a business enter into a joint venture, it can access a new market. Right students, for example, when foreign companies from joint venture in India, they get access to vast Indian market, they can also take advantage of retail outlets in different local markets. Right students, next is access to technology. Advanced technique of production leads to superior quality of products and reduced cost of production. It saves lot of time, energy and investment because they do not have to develop their own technology. Example, by joining hands with a company of developed nation, Indian companies can benefit of advanced technology. Right students, then next is innovation. Joint venture help business to come up with new and innovative products for the market because of new ideas and technology in foreign partners. Right students,
and low cost of production is also there. When international companies merge with an Indian company, they got immense benefit due to lower cost of production because of low cost of raw material, labor management, and professional persons like chartered accountants and engineers, scientists are available in India at cheap rate. I hope it is very much clear to you, students. Now come to the next case study, students. Okay, now students, come to the next case study. Come to the A point and B point. Which type of business enterprise is referred to it in the above paragraph? Okay. State any three features of the enterprises. Identify by quoting the lines from the above para. Enterprise पूछिए या तो public enterprise होगी या private enterprise होगी. Let's discuss from the case study, students. Max Limited, a foreign company, start its business in underdeveloped country. The size of the business is quite large. The company has plenty of resources. It employs thousands of people in the underdeveloped country. Right, students? क्लियर हो रहा है कि ये MNC से रिलेटेड कोई बात हो रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड बात हो रही है, स्टूडेंट्स. राइट? The raw material used by the company are readily available here. However, since there was not demand for these raw material here, the producer were unable to get the best price of it. Due to this reason, the producer were discouraged. Some local businessmen used to act aberrately earlier, but now they have corrected themselves. The reason for their becoming better is competition with the foreign company. राइट स्टूडेंट? तो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर कंपटीशन कर रही है, ज्वाइन नहीं करा है. स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ज्वाइन नहीं करा है. ना तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ना ही ये आपका जॉइंट वेंचर है. यहाँ पर कंपटीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर MNC की बात होगी. नाउ देयर आर्बिट्रेटरी अप्रोच हैज एंटेड टुगेदर. आर्बिट्रेटरी अप्रोच ऑफ अ बिजनेसमैन इन इंडिया जो यहाँ पर दिया हुआ है, इट मीन्स की दे आर यूजिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग. Max Limited is using completely the latest technology in its various business activities. As a result, the local people also have got the opportunity to learn the new technology. Because of using the modern technology and doing production at a large scale, the company's cost of production is low. Because of its huge size and status, the company occupied a dominant position in the market and took over some domestic firms. Right, students? It is very much clear to you, students. So बेटा इसमें क्या है? This is the case of multinational companies. Right, students? So which type of business enterprise is referred to in the above paragraph? Multinational company. State any three features. किसके फीचर्स पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स? मल्टीनेशनल कंपनीज के इसमें फीचर्स पूछे गए हैं. राइट स्टूडेंट? तो वेरी फर्स्ट फीचर इज स्टूडेंट्स अंडर मल्टीनेशनल कंपनीज, जायंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. द एसेट एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज. These companies are operate on large scale. Their operations are so huge that sometimes their sales turnover exceeds the gross national product of a developed country. For example, the physical assets of IBM International Business Machine exceeds $8 billion. Right, students? I hope it is very much clear. Come to the next one, centralized control. The branches of multinational companies spread in different countries are controlled and managed from the headquarters located in the home country. Right, students? Advanced technology. Multinational companies make use of latest technology to supply world-class products. They employ capital-intensive technology and innovative techniques in production. Students, they employ capital-intensive technology because क्यों बेटा? क्योंकि बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी से जाइंट साइज, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत बड़े स्केल पे होता है और उनके पास कैपिटल भी और प्रॉफिट भी बहुत बड़े स्केल पे होता है. Advanced technology. Multinational companies make use of latest technology to supply world-class products. They employ capital-intensive technology and innovative techniques of production. Right, students? Next one is, students, I hope it is very much clear. Expansion of market territory. Due to the vast resources and excellent marketing skill, a multinational corporation has access to international market. It is able to sell its products, service in different countries. A multinational corporation operates in more than one country. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through a network of branches and subsidiaries in host country. Right, students? I hope this is very much clear to you, students. Right? So multinational means a company which operates in many countries. Such a company has branches, factories, workshops in different countries. A multinational corporation is also known as transnational corporation, global enterprise or international enterprise. The headquarters of multinational corporation are located in one country, that is home country, and it carries out its branches in the host country. Right, students? That is Coca-Cola, Hyundai, Reebok, LG, Samsung. These are the example for multinational corporation. I hope it is very much clear to you, students. Now come to the next case study.
Okay, now students, identify the form of enterprises and state its importance. चलिए, this is supposed to be the next case study. Give any three features of such enterprises. 4 marks का ये क्वेश्चन है. Right students, so let's discuss the case study. इन्होंने कुछ कोई एंटरप्राइज पूछी, वो एंटरप्राइज कोई भी हो सकती है. केस स्टडी से पता लगेगी कि कौन सी एंटरप्राइज है. The government planned to begin a road project. The government needed management specialist and financial help to complete it. The government contracted the private sector to fulfill their requirement. Now it is very much clear. यहाँ पे बेटा गवर्नमेंट ने ठेके पे रोड बनवाई है प्राइवेट सेक्टर से. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आ गया है तो एक ही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स इसके अंदर, एक ही एंटरप्राइजेस है. ना तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ना ये गवर्नमेंट कंपनी है, ना ये स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन होगा, ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होगा, ना ही बेटा ये एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ना ही ये जॉइंट वेंचर है. इट इज ओनली कम्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. बिकॉज इट इज बीन वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स. अगर आप देखें, द गवर्नमेंट प्लान्ड टू बिगिन अ रोड प्रोजेक्ट. द गवर्नमेंट नीडेड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड फाइनेंशियल हेल्प टू कंप्लीट इट. द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड द प्राइवेट सेक्टर टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट. नाउ this project will be completed jointly by both the public sector and private sector. देखिए क्लियर हो गया है. It has been clear students from this line. Now this project will be completed jointly by both the public sector and private sector, where public sector or private sector exist together to form a project, to complete a project that comes under public private partnership. Now a point, identify the form and then give any three features to students. So public private partnership. Public-private partnership describes a government service or private business venture. These schemes are also known as P3 or PPP. Right, student? For example, a hospital building financed and constructed by a private developer and then leased to hospital authority. The private company acts as the landlord and provides housekeeping services and other non-medical services, where hospital services are provided by the hospital authority, that is government. Now come to the features. Very first feature, contract between public sector and private sector. These are the first feature. Public-private partnership is a contract between a public sector authority and private party, in which private party provides a public service and bears financial, technical and operational risk. Second, student, cost of using services. In some types of public-private partnership, the cost of using services is borne by the user or service and not by the taxpayer, and some of the cost of providing services is borne wholly or partly by the government. Right, students? Sharing of revenue. The revenue of public-private partnership is shared between the government and private enterprises in the agreed ratio. Right, students? Public welfare. Public-private partnership is used in the government project targeted as a public welfare. For example, I gave you the example also, students, Delhi Metro Railway Corporation. Projects that aim at creating public goods in infrastructure sector, the government provide a capital subsidy in the form of one-time grant to make it more attractive to the private sector. Right, student? I hope it is very much clear to you. Public-private partnership is suitable for high-priority projects such as infrastructure sector. PPP is used in the government projects targeted at public welfare. Example, Delhi Metro Rail Corporation. I hope this is very much clear to you. Now here's the case studies beta. Now go through the chapter, go through the short notes, learn the notes, watch my videos very much carefully and solve these case studies in your assignment copy, students. Then comes to the next part, students. Now students, let's discuss the one more topic, students, that is changing role of public sector. Public sector को private sector में convert किया जा रहा है. The very first point is reduction in the number of industries reserved for public sector. Initially, students, 17 industries were reserved for the public sector, but as per the new industrial policy 1991, it reduced this number to 8, which has been further reduced to 3 in 2001, and these 3 industries are atomic energy, arms and rail transport. Right, students, I hope it is very much clear to you, students. So at present, under public sector units, there is atomic energy, rail transport and arms. Now come to the next one. Next one is, students, disinvestment of shares. राइट स्टूडेंट्स, एक होता है वर्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है वर्ड डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट मींस सेल करना. इट मींस सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक with the aim of increasing the participation of general public and workers in the ownership of these enterprises and raise funds. Shares
of some of the public sector enterprises has been sold to the private sector and to the public. जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉस में चल रही है स्टूडेंट्स, उनके शेयर्स प्राइवेट कंपनीज को बेच दिए जाते हैं, जिनसे एक तो पब्लिक कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अर्न होगा और प्राइवेट की शेयर होल्डिंग ओनरशिप उन पब्लिक कंपनी में बढ़ेगी. राइट स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Policy regarding SIC units as same that of private sector. Right students, the SIC public sector enterprises get referred to the Board of Industrial and Financial Reconstruction. As I told you earlier students, there is one enterprise known as BIFR, Board of Industrial and Financial Reconstruction. उसका मेन काम यही होता है स्टूडेंट्स कि वो ये देखता है कि ऐसी कौन सी SIC यूनिट है जो कि रिवाइव हो सकती हैं और ऐसी कौन सी SIC यूनिट है जो रिवाइव नहीं हो सकती, उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना चाहिए. All the loss-making public sector enterprises were handed over to BIFR, Board of Industrial and Financial Reconstruction. The BIFR decided to wind up some very sick units and to revive and rehabilitate some other sick units where there is a scope to convert them into healthy units. Right, students? There was a lot of opposition shown by the workers and employees of units which were decided to close down. So the government of India has set up National Renewal Fund to rehabilitate and compensate the workers and offer them VRS, voluntary retirement schemes. I hope this is very much clear to you. That's why government has taken the steps for VRS students. It is very much clear to you. Now come to the next one students. The next one is Memorandum of Understanding. Now what do you mean by the Memorandum of Understanding students? A system of Memorandum of Understanding, a public sector is given greater autonomy. Right student, greater freedom दी जाती है. There are given a target. उनको टारगेट दिया जाता है कि अच्छा चलिए हम आपकी यूनिट को बंद नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट ये कहती है पब्लिक सेक्टर यूनिट से, हम आपको एक टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम तक आप अपने बिजनेस यूनिट को, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको इम्प्रूव करिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स एंड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी टर्म्स ऑल्सो. Under Memorandum of Understanding, the public sector is given greater autonomy. They are given the targets, students, and to achieve these targets, these units are granted operational freedom, but they are accountable for not achieving the result on time. If they are not achieving the result on time, then they are accountable to the parliament. Right, students? I hope it is very much clear to you, students. So mark present on both the videos, students, today, and learn the notes. If you find any difficulty, you can ask me anytime. Prepare the notes, learn the notes, students. Go through the PowerPoint presentation and do the exercises very much clearly. If you find any difficulty, you can ask me. Thank you, students.